Hello students, today we will discuss how to apply Euler's method for the solution of ordinary differential equations. So this is a formula for the Euler's method that अगर सानू nth approximation चाहिए है, the nth approximation is n minus 1th approximation plus h f of x naught initial point plus n minus 1 into h y n minus 1. This is a formula and we will apply the formula to find the solution of ordinary differential equations. The first example we will discuss is using Euler's method. Find an approximate value of y corresponding to the point x is equal to 1. Given dy by dx is x plus y is 1 when x is 0. So this x is equal to 0 point is x naught. When x is 0, what is y? Y is 1. So this is also given to us that x naught is 0 and y naught is 1. Value, initial value, first value of x is x naught. At this value, what is y? That is our y naught. So this differential equation is given to us. Dy by dx is x plus y. So we will choose a step size. ਅਸੀਂ किस point तक जाना हैगा? x is 1. So जिन्ना step size ਅਸੀਂ छोटा रखांगे, the more accuracy will be there. And जिन्ना तुसी 0 to 1 तक jump करके जाओगे, the level of accuracy will become, ठीक है, less घट होएगा level of accuracy and ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ actual integration ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ numerical ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ h step size ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ 0.1। तो ਅਸੀਂ 0 point ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ 1 ਤੱਕ। तो number of points ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ x is 0, 0 to baad 0.1, then 0.2 and so on. So firstly question is कि what will be y किस point ते at 1. तो असी कित्थों कैलकुलेट करना शुरू कर देना at x naught is equal to 0 तो first calculation की करनी है कि what will be y at the point 0.1, then what will be y at the point 0.2 and so on. Finally we will find y at the point 1. So these are the calculations. So ਅਸੀਂ h ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ 0.1, ਅਸੀਂ 0.2 0.5 ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ h ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ देयर विल बी सम एरर्स इन द ਆਨਸਰ। ਥੋੜੀਆਂ ਐਰਰਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ 0। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ x0 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1 ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ f of x means what? f of xy means dy by dx. So in this question what is our f of x? In this question what is our f of xy? f of xy is x plus y. तो इत्थे f दियां कैलकुलेशनस लिखियां ने f of xy is dy by dx which is x plus y. तो फर्स्ट पॉइंट्स दे उत्ते f of xy कितना होएगा 0 plus 1. Now write the formula. yn is yn minus 1 plus h f of x naught plus n minus 1 h into yn minus 1. तो असी nth approximation अगर करनी है तो ये फॉर्मूला आपा केड़ी करनी है n is equal to 1. First approximation put n is 1, put n is 1, put n is 1, 1 minus 1 0, ठीक है। सो y नॉट कितनी सी 1, h कितना लिया 0.1, f of x naught y naught means फर्स्ट पॉइंट दे उत्ते f कितना है 1. So this will give us the value of y1, y1 1.1, y1 ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ x1 ਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ x1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ x naught plus h. What was x naught 0, h कितना सी 0.1. So what is x1? x1 is 0.1. एक स्टैप हो गया, अगले स्टैप ते चलते हैं। हुण x ਨੂੰ एक स्टैप अगे लै जाइए 0.1। इस स्टैप ते y कितनी आई है y1 कितना आया y1 इज 1.1। नैक्सट की करना है दोनों ਨੂੰ सम पुट इन द फॉर्मूला आउटसाइड वाली वैल्यू भी चेंज होंदी है तो नैक्सट भी। तो इनू सिंपल जा की रखना है कि ओल्ड वाई जो पहले कड्डी हुई है एच की वैल्यू इनटू द डेरीवेटिव की वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द ओल्ड वाई
ਵੈਲਿਊ ਆਫ h ਇਨਟੂ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਓਲਡ y ਪਲਸ h ਇਨਟੂ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ y2 ਪੁਆਇੰਟ। y2 ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, y2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2। ਸੋ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ x2, 0.1 ਦੇ ਅੰਦਰ 0.1 ਐਡ ਕਰਿਆ ਤੇ x2 ਹੋ ਗਿਆ 0.2। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ x2। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 0.1 ਤੇ ਸੀਗੇ, h ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਸ 'ਚ, ਪਿੱਛੇ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ y2 ਕਿੰਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ 1.22, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ dy by dx is x plus y। then write the formula, put n is equal to 3, ठीक है। this is a value of the function at x2 y2, x2 y2 तो वैल्यू कितनी है 1.42, h कितना है 0.1, what is y2, y2 we have calculated 1.22, so this will give us value for y3। अगेन इसी वैल्यू ਨੂੰ ਅੱਗੇ शिफ्ट कर दें, सो ये हो गया वैल्यू ऑफ y, y3 इतने आ जाएगा x3। then what is dy by dx, x plus y, sum of the values। again write the formula, put n is equal to 4। तो फॉर्मूले ਨੂੰ लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज की क्या सीगा, दैट y is old y plus h into the derivative, old y h into the value of derivative। सो इसी तरीके नाल असी 10 स्टैप्स तक चले जाएंगे। जिमें मेरा 9th स्टैप आ गया, 9th स्टैप प्रीवियस वैल्यूज़ अगे शिफ्ट हो ही जा रही हैं। सो 9th स्टैप ते पहुँच के मेरे को बनूगा y10 इज़ y9 प्लस h f ऑफ x9 y9, f of x9 y9 h and y9, so this will be y10। तो y10 इज़ 3.18, इतने y10 निकल गया, तो इतने जस्ट अगे लिखना है, अगे कैलकुलेशन नहीं है। सो 0.1 ऐड किया तो 1.0, and what is y, y is 3.8, 3.18, so answer is y at 1.0 is 3.18।